And now let's move to Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, where local shopkeepers and leaders have staged a protest against steep rent increases and the illegal sealing of shops due to non-payments. The Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee is demanding immediate action from POJK Prime Minister Anwarul Haq to reopen their businesses. The committee accuses the administration of misinterpreting a Supreme Court order leading to unaffordable rents. Traders facing financial strain are voicing their frustration, feeling exploited and abandoned. A report. Local leaders and tenant shopkeepers in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir have organized a protest against the authorities over an increase in shop rents and the illegal sealing of their shops due to non-payment of the new rates. The tenants have demanded immediate action from POJK Prime Minister Anwarul Haq to reopen their shops. The protest, led by Shaukat Nawaz Mir of the Jammu and Kashmir Joint Awami Action Committee, saw sellers and shopkeepers gathering at a local chowk to address the sudden closure of their shops. इशू ये है कि महकमा औकाफ का और इन दुकानदारान का कोई रेंट के ऊपर एक हमारा क्लैश चल रहा था, एक तनाज़ा था। वो था फेयर रेंट का मामला कि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को बार बार डिस्कस किया जा रहा है, जो महकमा औकाफ की तरफ से किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मार्केट रेट के मुताबिक किरायों का तयन किया जाए। तो हमने जब इन पर एतराज़ किया कि आपने अगर इस मार्केट को देखा है तो वो सामने दुकान है, इतनी बड़ी दुकान है, उसका किराया 18,000। ये आपके पीछे जिसका फ्रंट जो है 13 फुट है, उसका किराया इन्होंने 12,000 से 26,500 कर दिया। तो ये बताया जाए कि ये किस मैकेनिज्म से बनाया गया। Mir accused the administration of misinterpreting the Supreme Court's order and unfairly treating the public by sealing their shops due to non-payment of the inflated rents. The frustrated shopkeepers and traders organized a sit-in at one of the prominent community squares in Muzaffarabad to protest the exorbitant rents imposed on their shops. आज से तकरीबन 3-4 साल पहले इन्होंने 2000 से 12,000 कर दिया था। फिर इन्होंने ये वादा किया था कि हम ये किराया जो है आपको इसमें पक्की दुकानें बना के RCC और इसी किराए पे देंगे। फिर वो अपने वादे से मुकर गए और अब जो है मेरा किराया 12,000 से उन्होंने 26,500 रुपये कर दिया है। मैं गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं 26,500 इनको दूंगा और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? The rent increase adds to the uncertainty for locals, impacting their ability to manage family expenses. Residents in POJK have long accused the puppet authorities of leaving them in a state of uncertainty. They believe the administration is helping Islamabad fill its coffers by allowing economic exploitation in the region. After all, their lives don't matter as much as the lives of the administrators and their cronies.